Okay, beta, ready? Yes, sir. Okay, so let's move on to the third and final concept of rendezvous, that is with different current at own location and target location. Now, this is the most complicated of all. This is a bit tricky, so we will have to remember the steps. ये हमें याद रखने पड़ेंगे बेटा कि ये steps हैं इस plot को करने के लिए. Once you remember the steps, then plotting it is easy. So let's go into the presentation and see how do we solve this difficult question. Let's now move out to the third type of rendezvous, that is rendezvous with different currents for own ship and the target ship. Now, before we begin, let me tell you that this is a very unrealistic kind of scenario, that you are having a different current in your ship position and a different current in the target ship position. Logically, may not be right, but if you face this type of question, though it rarely comes in the exam, but if you face this type of question, we can easily find out what will be the rendezvous position as well as the rendezvous time. So let's see how do we solve. Now, first we have to plot the own ship position on the chart. So let's assume this is where our position is. Let's name it as A. We have to plot the target ship position. Let's assume the target is here, and we name it as point B, and we join them with a line. This is exactly similar to what we had done earlier. Now what we do is, Sir, slide is not showing, sir. we have to make the बेटा स्लाइड नहीं दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. दिख नहीं रही है, sir. Okay, beta, hold on. दिख रही है सर. Right from the beginning it was not visible? Yes, sir. सर दिख रही थी सर. सर हमें दिख रही थी. Okay, not an issue, I'll repeat it again. Can you see the slide now, beta? Yes, sir. Yes, sir. Now I see. Okay, I'm repeating this one right from the beginning, beta. Okay, sir. Now, before we begin, let me tell you that this is a very unrealistic kind of scenario, that you are having a different current in your ship position and a different current in the target ship position. Logically, may not be right, but if you face this type of question, though it rarely comes in the exam, but if you face this type of question,
we can easily find out what will be the rendezvous position as well as the rendezvous time. So let's see how do we solve. Now first we have to plot the own ship position on the chart. So let's assume this is where our position is. Let's name it as A. We have to plot the target ship position. Let's assume the target is here and we name it as point B and we join them with a line. This is exactly similar to what we had done earlier. Now what we do is we have to make the course distance and current, course speed and current, or the course made good triangle for target ship for 1 hour. So for this, what we do is we first plot the course steered by other ship. You see this blue color vector here, Bravo Charlie. This is the course steered by the other ship. Let's mark it with a single arrow. Now from point C, I plot the current vector. This is the current which is given to us in the question and the current which is acting at the target location. So this is the current vector here, the red color vector. Let's mark it with 3 arrows. So we have the current vector with 3 arrows. Wherever this vector is ending, let's name that point as point D. Now, if we join Bravo to Delta, this Bravo Delta basically gives us सर आगे की स्लाइड बहुत देर में आ रही है. target. Say again, beta. सर स्लाइड अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो रही सर. एक बार कोई लाइन आ रही है फिर बाद में काफी देर बाद आ रही है. Is it with everyone? सर सेम हियर सर. सर मेरे भी ना लैपटॉप में ऐसा हो रहा है. फोन में मैंने लॉगिन किया, फोन में तो सेम टाइम आ रहा है वो ना. मेरे लैपटॉप में सही आ रहा है सर. सही आ रहा है सर सही आ रहा है सर. सही आ रहा है सर. Okay. नेटवर्क का इशू होगा क्योंकि कभी कभी ठीक आता है, कभी कभी दिक्कत आ रही है. Okay, all right. Everything seems to be okay from my side here. Anyway, I'll just stop it and share again. Target ship. So this completes the course made good triangle of the target ship. All this information is given to us in the question. We have the course steered, the engine speed of the target ship. We have the current which is present in the target ship location. So we can easily plot these on the chart and find out the course made good by the target ship. So beta, are you getting it clear now? Yes sir, clear now. Okay. now is okay, sir. Yes. What basically we have done is we have just made the course distance and current vector triangle for the target ship. So in these questions, they will give us the CTS, they will give us the current for the target vessel. So using both of them, we have just made this triangle and found out the CMG. Any doubt up to here, beta? No sir, no. Okay, let's proceed ahead then. Now the next thing which we have to do is we have to apply the current vector acting at our ship location. You see the currents are different in both the locations now. Target ship is facing a different current
and our ship is experiencing a different current. So now we have to plot the current which is applicable at our own ship location at point D in the reverse direction or opposite direction. So let's plot it. Let's assume the current which is given to us at our ship location is northerly current. ये वाला पार्ट रिपीट करना सर, रिवर्स डायरेक्शन वाला सर पार्ट So we रिपीट have the करेंगे सर. current vector plotted at point D in the reverse direction. Okay, ये समझ में नहीं आया बेटा? नहीं सर, रिवर्स वाला जैसे वर्ड आया सर वो सब खत्म हो गया सर. नहीं आया सर, नहीं आया. ओके बेटा, मैं समझाता हूँ अभी. ये डी पॉइंट तक तो पहुंच गया तुम? डी हाँ पॉइंट जी तक सर, तो कोई ट्रायंगल डाउट? कंप्लीट हो गया, डी आ गया. यस सर. राइट. अब बेटा इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि करंट जो है दोनों लोकेशन पे अलग अलग हैं, राइट? टारगेट में अलग, हमारी लोकेशन में अलग. हाँ सर, आई मीन टू से उसका अलग मतलब ऐसा है ना कि एक जगह 180 और एक जगह 090 है, या इसका मतलब ये है कि एक जगह 180 और दूसरी जगह 000 है. अलग का मतलब है बेटा कि जो टारगेट शिप की लोकेशन में है हमारी लोकेशन में उससे डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है ना. ओके. एनीथिंग. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है कि टारगेट शिप लोकेशन पे जो करंट वेक्टर है वो है 140. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज 140. ओके सर. और हमारी लोकेशन पे जो करंट वेक्टर है उसका सेट है 000 नदरली. ठीक है सर, ठीक है. तो सर इसमें आपने बोला ना कि रिवर्स लगाएंगे तो 000 का, तो साउथ वेस्टर्ली लगेगा ना फिर रिवर्स. ओके, रिवर्स लगाने का मतलब ये है बेटा कि डी पॉइंट से मैं 000 की डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगा. डी पॉइंट से मैं 180 की डायरेक्शन में इसे यहाँ पे मार्क करूंगा. बाकी करंट की डायरेक्शन तो हम चेंज नहीं कर सकते ना बेटा, वो तो रहेगी नॉर्थ ही. बट इट इज अप्लाइड इन द रिवर्स, मींस डी पॉइंट से ये रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है. और सर मान लो कि फर्स्ट करंट थी वो 210 होती तो अच्छा ठीक है, वो भी नीचे. ठीक है सर. सर ये करंट आपने, जैसे हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं उसकी जगह आपने डायरेक्ट आगे ही लगा दिया, वो उस प्रिंसिपल के हिसाब से किया ना सर? बेटा बाकी सारे प्रिंसिपल को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है. सर आप आगे करिए, शायद समझ आ जाएगा. आप आगे करिए. काउंटर एक्टिंग और अलाउइंग, इन दोनों प्रिंसिपल्स को भूल जाओ, ये क्वेश्चन उन दोनों से अलग है. सो आपको ये स्टेप याद रखना है कि जो भी करंट मेरी लोकेशन पे उन्होंने दिया है उसे डी पे अप्लाई करना है, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन. मींस नदरली करंट जो है वो डी पे अप्लाई करके और नॉर्थ में नहीं पहुंच जाना. नदरली करंट को डी पे ऐसे अप्लाई करना है दैट द एंड ऑफ द करंट वेक्टर इज एट डी. ठीक है सर, ठीक है सर. ओके बेटा, चले आगे. सर आगे. ओके, दिस इज ए स्टेप विच यू हैव टू रिमेंबर. अब ये ऐसा हमने क्यों लगाया, इसका आंसर आपको प्लॉट पूरा करने के बाद मिलेगा. आप देखोगे जैसे प्लॉट पूरा हो जाएगा यू विल रियलाइज कि ये हमने इस पर्टिकुलर वे में क्यों अप्लाई किया है. ये ना तो काउंटर एक्टिंग ऑफ द करंट है ना अलाउइंग ऑफ द करंट है. ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है बेटा जो रेंडेवू विद डिफरेंट करंट वाले टॉपिक में ही यूज होता है. ओके सर. सो लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ. And wherever this current vector ends, let's name that as point E. So this eco delta is the current applicable at our ship location. Now in the next step, we will draw an arc centered at point E and having a radius equal to the distance traveled by own ship in duration of 1 hour. So I open up my compass equal to my engine distance in 1 hour, center it at E, place it at point E, and I will draw an arc. So you can see this arc being drawn here. It cuts the line AB at a particular point. Let's name that point as point F.
Now we join F with E. So we have this line now which is joining F with E, Foxtrot Echo. Now this vector Foxtrot Echo is basically our course steered vector. You see, we have opened up our compass equal to the engine distance traveled by own ship in 1 hour. So this Foxtrot Echo is our course steered vector. बोलो बेटा. नहीं सर, कुछ नहीं सर. FD कोर्स मेड गुड हो गया ना सर. ओके, वेरी गुड बेटा, अगला काम वही करने वाला हूँ. सर फोर्थ स्टेट तो दिया हुआ है ना मेरे को वैसे भी. नहीं बेटा, ये तो रेंडेवू करना है ना, इसमें तो CTS निकालना है. You have to rendezvous with the other ship. So अगर आपको कोर्स ही दे दिया फिर तो क्वेश्चन बना ही नहीं. Did you understand बेटा? Yes sir. Right, so let's proceed ahead. Now, if we join Foxtrot with delta FD, let's join it. This vector FD, which we are seeing here, is basically our course made good vector. As you can see here, the blue color vector Foxtrot Echo is our course steered vector. The red color vector Echo to delta is the current which is applicable at own ship location. And the resultant of these two, that is blue and red vectors, is the green color vector Foxtrot delta. The resultant of CTS and current is the course made good. So this is the course made good vector for own ship. Once we have this course made good vector for own ship, we now transfer this course made good to point A. So we place our parallel ruler, align it with FD Foxtrot vector, transfer it to point A and draw a line. Now this line passing from point A will meet up with the course made good line of the target ship at some particular point. This line basically represents the course made good by own ship, and the point where it meets the course made good of the target ship, let's name that as point G, Golf. Now this point G or Golf is the rendezvous position in this particular case. So we have the rendezvous position here. Now to find out the time to rendezvous, we can calculate it by measuring this distance alpha golf. We measure this distance from the chart alpha golf, and we divide this distance with our speed made good. Our speed made good is available from this FD vector. You see, we made this vector triangle for 1 hour. So FD, which is a vector having a duration of 1 hour, represents our speed made good in 1 hour. So if you divide alpha golf distance with FD, which is our speed made good, we can easily obtain what is the time it will take for our ship to reach the rendezvous position. Okay, so अब इसको ध्यान से देखो बेटा, और मुझे बताओ इसमें कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर. All clear now बेटा? Yes sir. Okay, very good. अब बेटा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो
so that this method is remembered, because इस क्वेश्चन में ये ज़रूरी है कि मेथड हमें याद हो. अगर ये याद नहीं होगा तो फिर इसको प्लॉट करके निकालना बहुत मुश्किल है. So just take a screenshot, keep it safe with you. Now this time to rendezvous can also be found using the target ship data. You can measure distance Bravo Golf. This is the distance made good by the target ship to rendezvous position, and divide it by the speed made good of the other ship, which is Bravo Delta, and you will get the time to rendezvous. So this basically completes all the three type of rendezvous problems. Okay, beta, all right. Any doubts? No, sir. Very good. So this basically completes the rendezvous topic. The third topic which we did, that is with the different current, it very rarely appears in your paper. But even if it comes now, you know the method, you know the technique with which how to tackle it. So now beta is the time for our next assignment. So you will have questions based on the rendezvous topic. There is one question in the assignment which is based on missing course. So that is the last question of the assignment. So you can attempt all the rendezvous questions now. The missing course, you just leave it. That is our last topic for chart work. So next session, whenever I meet with you, we will do the missing course topic. Right? Okay, sir. Okay. So off for lunch now. See you in the next session. ठीक है सर. ठीक है सर. Okay. Okay, sir. थैंक यू सर. सर बोलो जी. सर एक बार वापस रिक्वेस्ट की पहले ही बोला था सर, ये जैसे मैच वाली क्लास और ये जो कार्गो की क्लास है आफ्टरनून में रख के आपकी स्टेबिलिटी की पहले ही रख लो सर क्लासेस प्लीज. बेटा ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, because the schedule is actually entangled all other courses with all other courses. You see naval architecture class में हमेशा मॉर्निंग में रखता हूँ. हाँ सर वो तो ठीक है. अब जैसे जो कार्गो की राजीव गुप्ता सर की क्लास थी, जैसे वो आज आप अपनी शुरू की 2 पहले ले लेते, वो चारों क्लासेस बाद में ऐसे. बेटा सारी क्लासेस वाले ऐसे ही बोलते हैं. हाँ सर हमारा मतलब समझ रहे हैं पूरा. नहीं वो तो मैं समझ गया बेटा. बट जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये सबके साथ है, तो धीरे धीरे सबके साथ शेयर करना पड़ेगा ना बेटा. अच्छा सर सभी के साथ प्रॉब्लम है सर ये. हमें लगा हम बेटा तुम लोग नॉर्मली हो ना, एबनॉर्मल थोड़ी हो. सो इफ यू आर नॉर्मल देन इट विल हैपन नॉर्मली. अच्छा सर ठीक है. ओके. सो नेवल आर्किटेक्चर, यस आई कैन एंश्योर कि वो लंच के पहले ही लगेंगी, बट नेविगेशन बेटा हो सकती है बाद में. ठीक है सर ठीक है. ओके, ओके सर. बट डोंट वरी अबाउट इट. नेविगेशन में तुम क्यों घबरा रहे हो? नहीं अगर सर तुम्हें घबरा हम नेविगेशन में नहीं, हमें हमारी कैपेबिलिटी पे कि इतना होने के बाद हमें नींद आना चालू हो जाती है ना, फिर वो क्लासेस तो वैसे हो जाती है ना. हमें ये थोड़ी है कि आपकी स्टडीज पे थोड़ी है, हमें तो हम पे है कि हमें नींद आना चालू हो जाती है. बेटा हम लोग बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर, शुरू में तुम लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम नेविगेशन में तो बड़े आराम से चल रहे हैं, हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे. हाँ सर इसीलिए पूछा. राइट. तो मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा हमारा टारगेट है कि फर्स्ट मंथ में हमने चार्ट वर्क को कंप्लीट करना है. राइट.
आज क्या तारीख है? हाँ अभी एग्जैक्ट 15 सर। और हमारे चार्ट वर्क में कितने टॉपिक बाकी हैं? बस एक सिर्फ एक टॉपिक बाकी है. सो वी आर राइट ऑन ट्रैक, डोंट वरी एट ऑल. इसी दिन आफ्टरनून में अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो मुझे बता देना. वी विल टेक यू ऑफ देन. ओके सर, थैंक यू, डोंट वरी. थैंक यू, ओके बेटा, सी यू देन. बाय बाय. बाय। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक्स. बाय बाय. थैंक्स.